Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about Aquarius Ascendants and year 2021 yearly prediction of first quarter, which has started from 1st January 2021 to 31st of March 2021. You know very well my all predictions are based on your ascendant sign, nothing to do with your moon sign or zodiac sign or sun sign. Just follow my videos, keep ascendant sign in your mind and listen my video. You will get 90% accurate prediction as per transit reading. So Aquarius 2021, Jupiter Saturn conjunction is in your 12th house. Your ascendant Lord ascendant Lord Saturn transit with Jupiter in your 12th house. In Capricorn sign from the start of the year 2021, from Jan 2021 to 31st of March 2021, these conjunction create Dharam Karam Adhapati Yoga in your 12th house. You need to be careful while spending your money. Some unexpected expenditures will irritate you. First quarter of year 2021 is not very promising for your professional life. You are feeling upset, disturbed. Mentally, you are not feeling comfortable and relaxed. Year 2021 start is not very promising for you, Aquarius. You will face some hurdles, problems, litigations, or you may face any type of government related issues. That may be tax related issues, that may be any type of legal matters will arise. You need to be careful. Don't start any new business in the start of the 2021, especially January, February and March is not very productive for you. You need to be careful while buying any property. You need to be careful investing your money in stock market. Don't invest your money anywhere in the first quarter of 2021. This is not very productive time for you. You will face some litigations, you will face some hurdles, problems. Things are not working as per your expectations because Jupiter Saturn is in your 12th house. 12th house transit of the Saturn is not very productive for your investments, for your returns from your old investment or your business ventures. 12th house Saturn transit is only productive for your long distance journeys. PR or work permit related things will active and you may get PR or work permit in foreign land. There is no doubt in the month of Feb and March. If you are willing to apply foreign land, you will definitely get PR. But first quarter will create a lot of troubles, hurdles, delays. You are not feeling comfortable and happy. You may achieve a lot of things, but after great struggle, you need to put your 100% effort at your workplace. Then you will get only 30 to 40% results. Aquarius, be positive. Do your best in first quarter because these 3 months is not very productive in all aspects of your life, especially your investments, your business, your job, your satisfaction level with seniors. You need to be careful and alert. Now I'm going to talk about Aquarius Ascendants Feb month. Month of Feb, you will face a lot of hurdles, problems, litigations. I'm telling you again and again, don't invest your money anywhere in first quarter of 2021. Otherwise, you will be a part of any problem. Avoid any type of fighting or arguments with anyone. That may be your spouse, that may be with your loved one, that may be with your kids, or that may be with your friends or business associate. Don't be a part of any argument or fight. Otherwise, you will see a lot of troubles. Aquarius, year 2021 आपके लिए पहला क्वार्टर कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है. किसी किस्म की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी के साथ तलखी से पेश ना आए, लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कानून के पचड़े में आप फंस सकते हैं. वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करना चाहते हो. जो आप डिज़र्व करते हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपना 100% बेस्ट देना पड़ेगा, तो जाकर आपको 30-40% बेनिफिट मिलेंगे. एक्वेरियस, ईयर 2021 आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है. जुपिटर सैटर्न आपके असेंडेंस के लॉर्ड 12th हाउस में होंगे और बृहस्पति भी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक धर्म कर्म अधापति योग स्थापित करेंगे, जो आपके लिए कुछ हर्डल्स, कुछ डिले, कुछ ऑप्टिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा. इस सारे समय में आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को बचा के रख सको, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ना रियल इस्टेट में, ना स्टॉक मार्केट में. दिस इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम. इवन योर मनी विच यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इज़ नॉट गोइंग टू गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स. आपको फर्स्ट क्वार्टर में किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी किस्म के लिटिगेशन में का हिस्सा नहीं बनना. अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ से उठ के चले जाना है.
किसी के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने, वो चाहे आपके लव्ड वन है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, या आप अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो। आर्गूमेंट्स जहाँ पर आप करोगे, थोड़ी सी ईगो दिखाओगे जहाँ पर, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसी आप चाहते हो ईयर 2021 में। एक्वेरियस, इस साल आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। एक्वेरियस, इस साल आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर चलने की ज़रूरत है। स्ट्रगल आएगी, इस पर कोई दो राय नहीं है, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से आप कुछ ना कुछ सीखोगे जो आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर एक्ट की तरह होगा। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 and it will be act like a game changer for you, because you will learn lot of new things in your life which you never have any type of experience. Those type of things will come in your life in Aquarius, for Aquarius in first quarter. You just need to focus on your things, do your best at your workplace, then you will get 30 to 40% results. Otherwise you will be a part of any type of litigation problem. You are not satisfied from your performance, even your seniors are not satisfied from your workplace. You're feeling very low and disturbed because Jupiter Saturn is in your 12th house. Mars is in Aries sign. It will little bit protect you because Mars is not a ruling planet, not a beneficiary planet for your ascendants. Your beneficiary planets is Saturn, Mercury and Venus. They are in well position. Mercury and Venus is a good position in first quarter. Then you will enjoy 30 to 40% success. Otherwise you will face lot of troubles, obstacles, hurdles. आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप डिज़र्व कर रहे हो या जो आप सोच कर बैठे हुए हो। अपने खर्चे की ओर ध्यान दें, अपनी चादर देख के पाँव पसारें, अपनी चादर से बाहर ना जाएं, अपनी हैसियत में रहें, दिखावा ना करें। जो आपके पास है एक्चुअल, उस चीज़ को संभाल कर चलें। डोंट स्पेंड योर मनी विदाउट एनी रीज़न। ओवर स्पेंडिंग ना करें, जहाँ पर आपने ओवर स्पेंडिंग करी नहीं वहाँ पर आपकी सेविंग्स हिली नहीं। एक्वेरियस, फर्स्ट क्वार्टर 2021 का 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आपके लिए कुछ हर्डल्स, चैलेंज, ऑब्स्टिकल्स, डिले लेकर आ रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, जिम करेंगे या अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी फैमिली में या आपकी हेल्थ के ऊपर भी कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें। स्टमक रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल विल इरिटेट यू। योर हेल्थ इज़ नॉट वेरी कंफर्ट, यू आर नॉट फीलिंग इन कंफर्ट जोन। Eyesight related trouble will irritate you. Your left eye related trouble will irritate you. Stomach related trouble irritate you. You're not feeling comfort zone. Aquarius, you need to be positive and do your best. Must do some worship or chanting of Lord Ganesha every day morning. When you start your day, read this mantra, Om Gan Ganpataye Namah, Om Gan Ganpataye Namah, Om Gan Ganpataye Namah. Read this mantra 108 time, 121 time, 150 time, 1 time, 201 time, 221 time. More you chant this mantra, more you achieve the things. You will feel much relaxed and comfort if you chant this mantra in a regular way. Day, night, morning, evening, walking, talking, while chanting this mantra. Whenever you are free, whenever your mind is free, you can chant this mantra. It will be a biggest game changer act. And must read Ganesh Chalisa, must read Goddess Kali Chalisa. It will be a biggest game changer act for maintain your good health. Otherwise your health will be matter of concern in first quarter. Health of your father will matter of concern in first quarter. Health of your any family member will matter of concern. Your money will spend on the hospitalization. Do some charity, must do some charity without any reason for medical charity. Must go for medical charity on Saturday, 3 time or 4 time in a first quarter. You will feel much relaxed and better. Otherwise first quarter will create a lot of hurdles, problems, some unexpected expenditures will irritate you. I'm praying for you a happy future. Thank you for watching my video. Happy New Year 2021. Merry Christmas. Happy New Year. And I'm praying for your happy future and long age of your parents. Thank you for watching my channel. Namaskar. Jai Hind.